105. Please, Lord. My Lord's order of 11th July. Yes. Original file has been obtained, Lord. 11 जुलाई के ऑर्डर में हुजूर सब रिकॉर्ड कर दिया गया है सबमिशन. Convert का हुआ था. Yes. और डायरी भी हुजूर देख लिया. What क्या is था? your instruction? Whether Lord, charge sheet has been filed in this case? No, my Lord, but No. but I rely on a judgment of the Honorable Supreme Court, my Lord, where it has been observed, my Lord, the direction, my Lord, the ingredients of 197 has been dealt in detail, my Lord, where it says, my Lord, कि at any stage of the trial, the question of sanction may arise, my Lord. Even At any stage of the trial, question of trial, not Correct. any stage of the proceeding. Have you gone through those judgments where it is stated that if a sanction is granted or lack of sanction, these issues should be raised at the earliest opportunity? My Lord, I am referring, my Lord, to the judgment, my Lord. Sanction may be examined in course of trial. There is no issue with that. This is settled law. That a challenge to the order granting sanction shall be made in course of trial, and the trial court will give opportunity to the prosecution My Lord, to bring witnesses, the evidences on the basis of which the trial court will see whether the sanctioning authority has applied its independent mind or not. my Lord. Here the question is differently cast. Here the submission is that you have acted in hot haste. On the one hand, the investigation has not been completed. No prima facie material has been collected to proceed against him. And you are acting in haste, granting sanction just to deprive him from getting promotion in IAS. No, my Lord. My Lord, the materials are there, my Lord, and in the original file of sanction, So my Lord, in original file, my Lord, it's a criminal case. my Lord. Whether the investigating agencies have found a prima facie case against. Your Lordship, therefore I am, my Lord, referring. Where to is that? That is why I am asking, where is the charge sheet? Charge sheet is not there, my Lord, So but the investigation is still pending? my Lord, in course of investigation, my Lord, the officials have gone through the case diary, my Lord, and in tabular form, they have. Whether the investigating agency has written you to grant sanction? Yes, your Lordship. Yes, your Lordship. Investigating agency has written you to grant sanction? Your Lordship. दिखाइए. निकालिए. Yes. जबकि इनका काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ 6 में है ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 दैट एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बाय लेटर डेटेड 25/6/2020 recommended to sanction prosecution. जी. My Lord, in the my Lord, top of the my Lord, file, my Lord, it has been written, my Lord, to the उत्पत्र द्वारा कुंडवा चैनपुर थाना कांड संख्या 1600 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12-13-2 सह पठित धारा 13(1)D में अप्राथमिक अभियुक्त कमलेश सिंह बिहार प्रशासनिक सेवा तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता पूर्वी चंपारण सह प्रभारी जिला प्रबंधक
राज्य खाद्य निगम मोतिहारी के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त पत्र के साथ प्राथमिकी की छाया प्रति, साक्ष्य ज्ञाप तालिका की छाया प्रति एवं कांड दैनिकी की छाया प्रति भी उपलब्ध कराई गई है। चूंकि प्राथमिकी की छाया प्रति अस्पष्ट एवं अपठनीय है, इसलिए यदि मान्य हो तो अपराध अनुसंधान विभाग से प्राथमिकी की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति उपलब्ध कराने की मांग की जा सकती है। उसके बाद उसको उपलब्ध करा दिया गया है। उसके बाद इसमें टेबुलर फॉर्म में किस किस केस डायरी के पारा में इनके खिलाफ एविडेंस आया है वो भी दिया है। Just a minute. So, पेज 263 देखा जाएगा। आपका IAS के लिए कब हुआ प्रपोजल? ये मोट आउट 24 तारीख 24 जुलाई। नहीं, स्टार्ट कब हुआ होगा? अप्रैल में गया। लेकिन आपके अगेंस्ट सैंक्शन के लिए जी 2020 में ही इसने भेज दिया था। इट इज नॉट दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस IAS। जोन ऑफ कंसिडरेशन में जब लोग आने लगता है तो लोग को सीनियरिटी है। इनफैक्ट 19 से ही चल रहा है। अब ये पुस्तिका जो है आपकी 2020 से केस लॉन्च हुआ 2015 15 में। जी, और उसके बाद एक खाली लिस्ट मांगे कि कौन कौन आदमी पोस्टेड थे, तो 2020 में 7/9/2020 को जी जो है ना, इसको उसके पहले ही रादर 25/6/2020 को ही अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग ने इनको भेज दिया था सामान्य प्रशासन विभाग को। जी And sanctioning authority has looked into the FIR, the case diary, and the other materials. So, the sanctioning authority has passed this sanction order after looking into those materials. लेकिन हुजूर के सामने भी डायरी है, उसी का एक जो पैराग्राफ है उसमें तो हमारे कंटेंशन को सपोर्ट कर रहा है कि अपने पीरियड में जो लक्ष्य था एज पर एग्रीमेंट उससे ज्यादा Allegation is not that of recovery. जी एलिगेशन इज कि उनको सप्लाई ही नहीं करना चाहिए था आपको। आपको सप्लाई नहीं करना चाहिए था बिकॉज दैट मिलर हैड नॉट रिटर्न द CMR ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इसीलिए हुजूर हम लोग लगाए थे जो इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी था कि जल्दी से और दीजिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा रेनी सीजन में। और दैट इज इन एक्शन 3 and 3/A। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो माने रिकवरी के लिए यही एक ऑफिसर है जिसने प्रोसेस किया, नोटिस किया उस राइस मिल को और रिकवरी किया। इट इज नॉट, इसीलिए ऑफिशियल फाइल मंगाया था। नाउ ऑन लुकिंग इनटू दिस इट अपीयर्स दैट इट इज नॉट डन इन हेस्ट कि आप का IAS में ड्यू हो गया था इसलिए 22 में जल्दी से आपको ये कर दिया। द फाइल हैड मूव्ड मैंने ऑलरेडी मूव 2 years ago on 25/6/2020 and once the sanctioning authority has taken a prima facie view based on the case diary and other materials, तो देखिए ना, there are series of judgments on that point. You will get an opportunity to contend whatever you like in course of trial. But here my lord the investigation is not complete। माल ऑफ ID पर हम आपको जी कंसिडर कर रहे थे पहले बिकॉज योर सबमिशन वाज कि साहब हम IAS में हमारा जब प्रमोशन ड्यू हो गया तब इन्होंने जल्दी से बिना कोई मटेरियल के हम हमारे 3 अगेंस्ट साल सेक्शन का ऑर्डर गए। तो उसी समय से हम लोग और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तब लेके क्या कि डायरी में भी हमारा सब कंटेंशन सपोर्ट करता है। फॉर्चुनेटली डायरी इज आल्सो हियर। No, diary is there, but the question is, should this court form a different opinion and substitute it in place of opinion of the sanctioning authority? If it is prima facie, my lord, No, I should restrain myself in recording any finding on that issue.
let us, then justiciability Law laid down by the Honorable Supreme Court is very clear. insofar as the order granting sanction is justiciable. There's no doubt about it. It can be scrutinized. So, Justiciable, but at what stage? Lord, This question has been specifically considered by the Supreme Court. Ashok Agrawal judgment आप निकाल लीजिए. After charge sheet. After charge sheet. No, at what stage? Ashok Agrawal judgment निकालिए. I think it is of 2014 or something. 2014 judgment. प्रीवियस 2020 में हुआ होगा. हुजूर हम लोग एक फैक्ट खाली कि एग्जैक्टली कब से इनका नाम जोन ऑफ कंसिडरेशन में है वो और सर्टन जजमेंट्स एक शॉर्ट उसके लिए कुछ जजमेंट्स हम लोग लड़ाई आपकी थोड़ी कठिन हो गई है. इसीलिए थोड़ा कोशिश करते हैं. हाँ, डेवलप कीजिए. But so far as I am of the view, I make it very clear to you. You prepare yourself on this point. First of all, the moot question which arises for consideration is whether this is the stage for this court to examine this issue. Number one. No. If not, then what is that stage? When the question relating to sanction may be two types of judgment. एक देखिएगा, एक अमीर जान करके होगा एक जजमेंट. अमीर जान. हाँ, अमीर जान के केस में the sanction was not granted. Court had taken cognizance. He challenged that. Then a question arose that no, even if there was no sanction, this question may be considered at the stage of trial. वहां कह दिया कि नहीं, if the sanction has not been granted and cognizance has been taken, then that question should be raised at the earliest opportunity. लेकिन जहां पर सैंक्शन ग्रांट हो गया वहां पर अशोक अग्रवाल केस में सभी जजमेंट्स को कंसीडर कर करके और समराइज किया हुआ है उसमें. दिस वाज द क्वेश्चन फ्रेम्ड इन दैट जजमेंट. दोनों को एग्जामिन एंड उसमें उन्होंने होल्ड किया कि दैट स्टेज विल बी द स्टेज ऑफ ट्रायल वेयर पार्टीज कैन लीड एविडेंस. द ट्रायल कोर्ट विल एग्जामिन whether the sanctioning authority had granted sanction by applying its independent mind, because grant of sanction is a statutory function. So whether he had done that, he had performed that statutory function independently, and that order was passed based on materials which prima facie indicated that. So that question will be considered by the trial court. एक जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि यहाँ तक कहा, उसमें हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दिया था, फाइंडिंग्स ऑन दैट. सुप्रीम कोर्ट सेड नो, हाई कोर्ट शुड हैव रिस्ट्रेन्ड इटसेल्फ फ्रॉम दिस. आप तो जानते हैं हमारा व्यू जो है उसमें if something is not to be done, then it is not to be done. If I will say anything, that will be wrong. एक जजमेंट है जो जिस पर हम रिलाई कर रहे हैं जो देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है. इसमें बहुत एलिबरेट है, बहुत सा ये रिपोर्टेड है 2016 वॉल्यूम 3 PL JR. उसमें देखिए ना, होगा वो अशोक अग्रवाल केस. इसमें बहुत सा जजमेंट है, इसमें तो पूरा नहीं देख रहे, बहुत सा है. मैक्सिमम सब जजमेंट को कंसीडर करके इसमें दिया गया है. देख लेते. और कौन सा पैराग्राफ? 37 देखा जाएगा उसमें. पेज नंबर? पेज 164. 164. शूज का कैसे होता है? 145 से 145.
Apartments. उनको हाँ उनको हरकत के लिए आयु दिया है वहाँ डिपार्टमेंट में इस पर बताइए कि इनका क्या क्या है तो विभाग से आया और इससे वो लोग आके देखिए ये लोग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया है आयु किया है और हमारा क्वेश्चन ही यही है एक्विजिशन के रिगार्डिंग मेरा मैटर पेंडिंग है इसमें सब देखिए कंसिडर्ड है। मनसुख लाल विठल दास चौहान एंड अब्दुल वहाब अंसारी एक अशोक अग्रवाल पर नजर नहीं पड़ी मेरी, लेकिन अशोक अग्रवाल में भी वही मनसुख लाल केस एंड वहाब अंसारी केस वो सब कंसर्न। बोलिए कब रखें इसको? इसको भी नेक्स्ट वीक में मंगली को रख दिया जाए। लिखिए लर्नेड काउंसिल फॉर द विजिलेंस ना State unit. Learned Counsel for the state has produced the original file from which he has submitted that a proposal for grant of sanction to prosecute the petitioner was mooted out by letter number 1080 dated 25/6/2020 issued by the additional Director General of Police, Director General CID, Police Stop. The sanctioning authority went through the FIR, case diary and other materials which were sent to him by the investigating agency, and on perusal thereof only the order granting sanction has been passed. Full stop. It is the submission of Learned Counsel for the state that the materials on the basis of which sanction has been granted may be looked into, and the question as to whether the sanctioning authority has performed its statutory function independently and on the basis of prima facie materials may be considered by the learned trial court only. Full stop. He has relied upon a judgment of the Honorable Supreme Court in the case of so and so versus so and so, reported in so and so. ये PLJR का दे रहे हैं क्या साइटेशन? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में PLJR का साइटेशन नहीं दीजिए, गिव SCC और एटलीस्ट AIR। हमेशा कोशिश करना चाहिए भाई, वो देख लीजिएगा उसका SCC साइटेशन पैडल निकाल कर, PLJR वाला नोट करा दीजिए खाली खोजने के लिए। नेक्स्ट, मिस्टर PN Sahi, learned senior counsel, assisted by Mr. Prabhakar Singh, learned advocate, requests to post this matter for further consideration on 26 जुलाई। 26th of July. Full stop. The official file is returned to Mr. So-and-so, the counsel for district. Let this matter be on 26th of July under the same heading, maintenance.
अजय, JC थे, GP थे।